Hi friends, welcome back. Hope you had a profitable expiry if you trade expiries, or hope you had a profitable day if you trade only Nifty or only Bank Nifty. So let's start with Nifty and Bank Nifty का analysis. अभी currently Nifty is at 22,050 close to. And if you remember, if you watched the previous video, I had given the range of 22,500 on the upside and 21,500 on the downside. So there was a gap of around 1,000 points in the range, and the middle point was around 22,000. And yet again, we are there only. Matlab, we are in the midpoint only, which is around 22,000. I am expecting a little bit more up move based on the price action. So if you see over here, we have a good support over here. If you see this level, which is close to 21,900 or 20,000 ish. So this is a good level that Nifty should halt its this 5-day fall. But we'll have to see what the price action says on the lower time frame. So if we go to the lower time frame, I'll go to the 15 minutes time frame. So if you see over here, this selling which came, I had maintained this stand कि this selling should stop in a day or two, and it stopped on Friday. And on Friday we had a little bit up move to sideways. Obviously, after this down move, we are not going to have a rocket up move on the upside. बट जो भी था ये इसने हॉल्ट कर दिया निफ्टी ने अपना डाउन मूव. तो if you see on the lower time frame, this is a crucial level to watch, 20 to 120ish around, because if you see over here, I'll just mark this level. So if you see over here, on this day 20 to 100 का जो लेवल है अराउंड 20 to 120 के आसपास. So ये लेवल होल्ड करने की कोशिश कर रहा था निफ्टी, बट देन इट ब्रोक डाउन, एंड अगेन ऑन फ्राइडे Nifty tried to break this level 20 to 100 का, but it was not successful and it came down and it traded below that only. तो इट सीम्स कि अभी डाउनसाइड इतना नहीं है, लेकिन अपसाइड आने में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा निफ्टी को, क्योंकि इतना भयंकर डाउनसाइड के बाद तुरंत अपसाइड आना, इट इज नॉट मतलब इट इज नॉट सम जिम्बाब्वे का मार्केट या पाकिस्तान का मार्केट या अपना इंडिया का मार्केट है. ये सब इतना बड़ा बड़ा कंपनीज है, एंड टू इतना मार्केट मूव करने को थोड़ा ये लगता है, मतलब कष्ट लगता है, थोड़ा पैसा लगता है. तो ये नहीं हो पाएगा. ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा. आई थिंक टुमारो शुड बी अ साइडवेज मार्केट. इतना ऊपर या इतना नीचे नहीं होना चाहिए, इज व्हाट आई एम सीइंग. But we never know. And anyways, for Nifty, we are going to play in this range, 20 to 500 on the upside and 21,500 on the downside. And कल थोड़ा सा अगर मूव आता है तो we are going to shift the ranges. For example, if there is during अगर 1-2 बजे तक we have a 100 point का up move, so this range that we have, this one 21,500 ka, we are going to bring it to 21,600, 21,700, depending on the how big the move is. And if you have to take the stop loss, if let's say there is a 300 point rally, which definitely is not going to happen, अगर वो होता है तो then we'll take a stop loss. But we are safe for tomorrow if it closes at around 21,150 के आसपास. So around 100 points, if the Nifty rallies or it goes down also from here around 21,900, and on the upside around 20 to 150 or 20 to 180 के आसपास तक, then we are safe. We are not going to change the position. मतलब if it goes upside, we are not going to change the call का position that we are in. So we are only going to shift the profitable position and not square up the losing position for at least tomorrow, because I see sideways market. And why I am saying this, because if you see India VIX पिछले time से, if I go to the daily time frame, ये इतना भयंकर मूव दिखा रहा था, बट इफ यू सी ऑन फ्राइडे इट टुक अ पॉज, मतलब थोड़ा सा वो रेस्ट करना चाहता है अभी, क्योंकि इतना वन साइड मूव जो आया है इस पे, दिस इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल. ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आएगा आई थिंक. ओके, सो दिस इज व्हाई आई एम फीलिंग कि ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहना चाहिए मार्केट, बट वी नेवर नो. सो ब्रॉडर रेंजेस तो ये है 20 to 500, 21,500. ओके, नाउ कमिंग टू ऑप्शन चेन. ऑप्शन चेन में इफ़ यू सी ओवर हियर, इतना कुछ माल मसाला नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे ओनली ऑन दिस स्ट्राइक 20 to 500 थोड़ा सा कॉल राइटिंग हुआ है, विच इज़ एज आई सेड, अपना जो एनालिसिस बैठ रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, उस पर भी यही स्ट्राइक आ रहा है. बट यहाँ पे पुट राइटिंग भी नहीं हुआ है ज़्यादा.
तो एज आई सेड कि मतलब इतना डेटा है नहीं यहाँ पे, एंड प्राइस एक्शन भी अपने को कुछ क्लियर कट सिग्नल्स नहीं दे रहा है। सो टुमारो कैन बी अ चॉपी डे, और विक्स भी अपने साथ है, मतलब विक्स भी इतना कुछ बढ़ नहीं रहा है, सो वोलेटिलिटी कम हो जाएगी शायद, डिपेंडिंग ऑन ऑल द पैरामीटर्स दैट वी करंटली हैव। तो अभी तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम होना चाहिए, सो इट कैन बी साइडवेज। So we'll have to see tomorrow, but we'll play in this range 22 500 and 21 500 for Nifty. Bank Nifty. This analysis is superb for us. मतलब if you see the beauty of this analysis, ये जो channel draw किया था, and you can see from the last week, ठीक है, every week, sorry, last week में every day I have been telling कि ये channel follow हो रहा है, ये जो upward channel दिख रहा है, and if you go on the lower time frame, you'll see over here कि ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ किया था यहाँ पे, इधर यहाँ पे पहले बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, और तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये पूरा इस इट इज आई थिंक द ऑपरेटर्स हैव सीन माय चार्ट, एंड उसी हिसाब से ही बैंक निफ्टी को प्ले कर रहे हैं। आई एम जस्ट जोकिंग ऑब्वियसली, बट ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निकल एनालिसिस, कि वो बता देता है पहले, इफ यू इफ यू नो हाउ टू प्लॉट द लाइंस करेक्टली। तो आई मीन ऑब्वियसली यू कैन गो रॉन्ग एज वेल, बट इस बार बहुत ब्यूटीफुली इसने बता दिया है कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न। आई आई डोंट थिंक अ ब्रेक डाउन शुड हैपन और कैन हैपन एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट लेना चाहिए एक दो दिन का, एंड द सेम थिंग गोज फॉर बैंक निफ्टी, कि इट इज गोइंग टू बी अ साइडवेज मार्केट, बट इट इज गोइंग टू बी मच मोर बेरिश देन निफ्टी, जो कि अपन 2-3 दिन से देखते आ रहे हैं। निफ्टी इतना बेरिश नहीं है, बट बैंक थोड़ा सा बेरिश है। दिस वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। अभी एसबीआई का रिजल्ट आया, पीएनबी का आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा का वगैरह आया था, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा ये हो रहा है। लेकिन आई थिंक मोटा मोटा दिस शुड फॉलो दिस पैटर्न। थोड़ा सा एक बाउंस बैक, एक ग्रीन कैंडल देखने मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस 7-8 कैंडल इफ यू सी ओवर हियर ये लाल ही था, तो एक थोड़ा सा ग्रीन कैंडल कल अपने को देखने मिल सकता है, बट स्टिल इट विल नॉट बी अ मेजर ग्रीन बिग बार जो होता है। इट विल नॉट बी लाइक दिस कैंडल व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर, ये छोटा सा एक ग्रीन कैंडल हो सकता है, इज व्हाट आई फील। बट एनीवेज वी हैव टू ट्रेड हॉरिजॉन्टली, तो इसका रेंज रहेगा, वी हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, 48,800 on the upside and 46,400 on the downside. And if I go to 5 minutes, the immediate resistance is 47,800 for Bank Nifty. And इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अराउंड ये 48,200 के लेवल्स आ सकते हैं। अगर ये ब्रेक डाउन देता है, सो ब्रेक डाउन आई थिंक कैन बी ब्रूटल, because this pattern has been forming since January 2024. इसका मतलब this is close to 5 months of pattern. So if breakdown happens, it can be brutal. So be ready to take a stop loss in this strike 46,400, and if the stop loss happens, then the next strike will be 45,600. Okay, so 800 points नीचे रहेगा, because that is the next support that I see. So if I mark it over here, yeah, correct. So this is the next support that I see. इसके बाद तो ये this is a major gap which got filled also, but this is a major gap. So this support is 45,600 का support है. If breakdown happens, which again I would like to repeat कि इतना probability नहीं लग रहा है break down होने का, एक छोटा सा green candle बनने का ही probability लगता है, but obviously markets are supreme and we'll have to see tomorrow कि what happens in Bank Nifty. If I come to option chain over here, option chain is a little bit bearish than Nifty. If you see over here, this call rating 48,000 का is very much strong. मतलब if you look at the height over here and बाकी सबका height देखोगे, so this is much taller, and इस पे फ्राइडे को भी राइटिंग हुआ है, तो इतना easily वो ग्रीन बार जो मैं बोल रहा था वो शायद ना आए, but I think still the probability of that happening is higher than a red bar, because of the continuous selling that we have seen in the last week. तो बट ऑप्शन चेन इज बेरिश इफ यू सी, ओके, द पुट राइटिंग कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। सो इफ यू आर प्योरली डेटा ड्रिवन ट्रेडर, तो आई थिंक यू शुड गो ऑन द शॉर्ट साइड, बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि ऑप्शन चेन का डेटा बदलने में 3 मिनट लगता है खाली, ओके। 3 मिनट में डेटा रिफ्रेश होता है, ऑप्शन चेन का डेटा तो ऑब्वियसली उसके पहले ही चेंज होता है। So you have to keep in mind before analyzing this data as well. But if you go purely by data, yes, it is bearish option chain. But the price action suggests that कि यहाँ पे थोड़ा सा एक halt हो सकता है.
ठीक है. So this is the analysis for Nifty and Bank Nifty. Again, if you want to see the ranges, just 22,500, 21,500 for Nifty, and ऊपर 48,800 and 46,400 for Bank Nifty, with a bias of slightly positive to sideways market for tomorrow. Hope you like the video, and please like, share, subscribe to the YouTube channel, and hope to see you tomorrow. Thank you.